Hello dear student, I am Bhavana Tiwari from DPS Alwani Lavachor. Again welcome you in my next video, that means today's video. Today we are going to start exercise 8.1 of Introduction to Trigonometry. Okay, so I told you the formulas, all the formulas in my last video. Please watch it and learn the last video's formula. Now today we are starting exercise 8.1. So look at here. So we are given in the first question, in a right angle triangle. I told you in the previous video only, always we will talk about right angle triangle, which is right angled at B. So you are given base AB 24 centimeter and perpendicular 7 centimeter. Okay? So you have to find sin A and cos A. First part, and second part you have to find sin C and cos C, value of these. So now very first we want hypotenuse also. So before doing this, we have to find the hypotenuse. How you will find? Let me start from here. Okay, solution. So for hypotenuse, using Pythagoras theorem, because this is right angle triangle. Okay, using Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? AC square is equals to base square plus perpendicular square. So AC square is equals to 576, 24 square plus 7 7s are 49. So AC square is equals to 9 10 15 ka 5, carry over 1 7 8, carry over 625. So AC is equals to root of 625, that means 25. Okay, so that means your hypotenuse comes 25 centimeter. Okay, this is 25 centimeter. So now easily we can find value of these. Now very first sin A. First part sin A. Or you know sin A is perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular here? A है ना, angle A, तो angle A, तो ये वाला base होगा, ठीक है? तो perpendicular ये हो गया. BC upon hypotenuse is AC. तो 7 upon 25. Same way cos A. तो हमें angle पे we have to focus on this angle, A angle. तो A angle this, तो ये base होगा, ठीक है? तो cos means base upon hypotenuse. That means AB upon AC. That means 24 upon 25. So these are the value of sin A and cos C. Now we want sin C. Okay? Sin C. Now we have to see the angle C. C. We have to focus on angle C. अब एंगल C ये होगा तो this will be the base. Okay? ये base हो जाएगा, ये perpendicular. Hypotenuse तो same रहेगा. Okay? तो sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse. That means AB upon AC. So what you will get? 24 upon 25. Same way देखो centimeter upon centimeter cancel out. No unit. Okay? Trigonometric ratios की no unit. Cos C. Cos क्या होता है? Base upon hypotenuse. तो base ये है. Base upon hypotenuse 7 upon 25. तो BC upon AC, which is equals to 7 upon 25. So this was your first question. Okay. So very easy. If the formulas are learned, the questions becomes very easy. But condition is you have to learn the formula. Okay. So now we will start question number 2. Okay. Question number 2 is find tan P minus cot R, and in this figure, and the figure is given to you. So this is PQR triangle, perpendicular, and if this we are taking right angle triangle, this is the right angle triangle. If we are taking this base, the perpendicular and hypotenuse are given to you. So before finding tan P and cot R, we need all three sides. ठीक है? तो इसका base भी find कर लेते हैं. तो using Pythagoras theorem, very first, okay? Using Pythagoras theorem. So now what is QR? QR is under root of 13 square minus 12 square. Pythagoras theorem use करना step को, ये last step आएगा. Okay? So QR is equals to 169 minus 144. So that means 5 and 2 25. So 5. So QR will come 5. So this will come 5 centimeter. Now you can find tan P. So therefore tan P minus cot R. अब tan P दिया है, तो first we have to take P. अब P के लिए ये base हो जाएगा, ये perpendicular, ये base और वो hypotenuse रहेगा, ठीक है? Tan theta is perpendicular upon base.
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर. नाउ वी हैव टू टेक आर, सी द एंगल्स. ओके, सो आर के लिए नाउ दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर. ओके, सो कॉट थीटा इज base upon perpendicular. Okay, so base upon perpendicular, therefore I am saying to you, learn the formulas very first. Cot theta is base upon perpendicular, so 5/12, this will come 0. So the value of this will come 0. Okay, है ना easy? So they are very easy. Condition is formula should be learned to you. बस एक बार formula learn कर लो. So these are very easy. Okay, so now let us start question number 3. Okay, now you are given if sin A is 3/4, calculate cos A and tan A. Whenever you are giving the value, always make a right angle triangle. Okay, so let me make a right angle triangle very first because हमें cos A और tan A निकालना है. Let me say this is angle A, ABC, this is right angle triangle. हमेशा ना sin A मतलब ये वाला इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है 3 and 4. तो यू कैन फाइंड द बेस नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड ऑल 3 साइड. जब तक तीनों साइड नहीं निकलती हैं वी कैन नॉट फाइंड दोस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर minus 3 square. तो AB square is equals to 16 minus 9. AB is equals to 7 √7. तो AB आ गया मेरे पास √7. अब हम cos A निकाल लेते हैं. So therefore cos A is equals to cos A. What is the formula of cos? Base upon hypotenuse. तो base हमारे पास A के लिए ये वाला base होगा. तो base क्या हो जाएगा? AB upon hypotenuse AC. So √7/4. Now we want tan A. A वाला ही है तो बेस ही हो जाएगा. तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB. So that means 3/√7. That's it. Okay. So this was your question number 3. Now let us do question number 4. Very easy now. Now your next question is 15 cot A is equals to 8. This is given to you. You have to find sin A and sec A. तो सबसे पहले हम cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं because the numbers are here. Okay. So what you will find? Cot A is equals to 8/15. बस what you have to do? Make a triangle और A ये वाला है तो A यहाँ पर लिख दो. ABC. अब cot A, cot theta is equals to base upon perpendicular. तो ऊपर वाला base हो गया अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, अपॉन ये परपेंडिकुलर हो गया. निकाल लो हाइपोटेन्यूज. ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64. सो 9 289. तो AC इज इक्वल्स टू √289. 289 किसका रूट होता है? 17 का. ठीक है, so now this will come 17. अब you can find sin A and sec A now. तो therefore sin A क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse BC upon AC. So 5/17. And the next you have to find sec A. तो sec A is equals to sec is opposite of cos. Sec cos का opposite होता है. तो cos थीटा होता है base upon hypotenuse. तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. ठीक है, तो दैट मीन्स AC अपॉन AB. सो दैट मीन्स 17/8. ओके, सो दीज आर योर, दिस वाज योर 4th क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी ना. सो नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट. So now next 5th question is you are given sec theta is 13/12. So you have to find all the trigonometric ratios. All means sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. ये सारे के सारे you have to find all trigonometric ratios. तो sec theta की वैल्यू दी है तो क्या करना है? सबसे पहले थीटा यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर बनाओ. ठीक है, इसको कुछ भी नेम दे दो ABC. So now सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस का. 1/cos थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज.
तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, तो 13 अपॉन 12. Okay, you have to find BC now using Pythagoras theorem. अब 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 169 माइनस इसको इधर लाओ 144 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52. BC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5. तो BC हमारे पास 5 आ गया. अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. सो देयरफॉर सबसे पहले साइन थीटा निकालो. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो BC अपॉन AC कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 13. देन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 13. इसके बाद आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. सो BC अपॉन AB. सो 5 अपॉन 12. 10 के बाद क्या होता है? कॉट थीटा. कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो AB अपॉन BC. 12 अपॉन 5. 12 के बाद फिर क्या होता है? सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो AC अपॉन AB. हाउ मच? 13 अपॉन 12. एंड लास्ट कोसेक थीटा. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. That means AC upon BC. That means 13 upon 5. Okay. So these are your all trigonometric ratios. Okay. It's very easy exercise. So now let us start question number 6. So now question number 6 is, if angle A and B are acute angles, अगर A और B acute angles हैं, such that cos A and cos A equals to cos B, so you have to show that angle A equals to angle B. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? There are two methods of doing this. We are doing the short method. ठीक है. तो मैं कह देती हूँ A B C. तो obvious है कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो rest two are acute angle. So now B I can say this one. ठीक है. So B and C, because they are given A and B are acute angles. So A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B. Cos A और cos B दोनों equal है. तो हमें शो करना है एंगल A और B भी equal है. तो सबसे पहले हम यहाँ से cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है. cos A which is given to us. Solution. cos A कितना होता है? ये एंगल A है. ठीक है. तो cos means base upon hypotenuse. That means AC upon AB. अब निकाल लो cos B. cos B. And now for this angle now, अगर ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. cos B is base upon hypotenuse, तो BC upon AB. BC upon AB. अब गिवन क्या है हमें? गिवन है cos A is equals to cos B. दोनों को इक्वल कर दो. AC upon AB is equals to BC upon AB. Now look at here, AB to AB cancel, which shows AC is equals to BC. तो AC और BC दोनों equal है. तो अगर किसी triangle में two sides are equal, then it is isosceles triangle. So therefore triangle ABC is isosceles triangle. अगर ये isosceles triangle है तो therefore angle A is equals to angle B. Proved. Okay, so this is your 6th question. In this video we are doing only 6 questions. From question number 7 to 11 we will do in next video. Hope you like the video. Please do like and share the video. Thank you very much for this video. Bye bye.